अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी बांग्लादेश हिडन वर्ल्ड्स शेप्ड बाय वाटर एंड टाइम। अच्छा, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, लेकिन इसके टाइटल को अगर हम गौर से देखें तो टाइटल बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है। लेकिन आगे देखने को क्या मिलने वाला है वो तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो पहले वीडियो को देखते हैं, उसको समझते हैं और फिर जो गैदर कर पाएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलता अपने वीडियो की तरफ और हम आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलें ज़ैद, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। Bangladesh, a world written in water. Before the land awakens, Bangladesh rises with water. Here, rivers are not borders. They are the beginning of every life. Water carves the land, carries its stories, and returns them to the sea. From monsoon clouds to tidal breaths, this is a nation shaped by rhythm. वाह, बात तो सही कर रहे हैं। Where others build walls, Bangladesh builds ways to live with the rising water. वाह, Here, delightful. life moves like the tide, arriving, retreating, and returning again. मंडी लग रही है, हाँ। Now, let us follow the water and step into the heart of Bangladesh. From the sky, our journey descends into Dhaka, a metropolis alive with 20 million heartbeats. वाह, Roads weave through the city like restless rivers of light. Rooftops rise in endless waves, each holding a different world of morning rituals. The call to prayer drifts above the noise, steady as the sky. Buses, rickshaws, and crowds flow together, movement becoming the language of the city. Yet in the maze of chaos, tea stalls burn like small fires of comfort. Faces pass like chapters, each holding a story older than the street beneath them. Dhaka breathes with noise, color, struggle, and hope. Never still, never empty. And high above it all, the city gathers into a single shining pulse. Dhaka, where life moves faster than time itself. Our journey descends from the sky to the restless water, into Sadargat, the beating river heart of Dhaka. Hundreds of boats weave through the current like threads sewing the city together. Ferries roar, wooden boats glide, and the river becomes a map drawn by motion. River workers move with practiced rhythm, lifting, pushing, balancing life in their hands. The smell of wood, water,
and warm air wraps the harbor like an old memory. Sunlight scatters across the waves, turning the river into broken silver. Above it all, Dhaka rises, alive, unplanned, unstoppable. Sadargat, where the river breathes for the city and the city listens. River breathes for the city and city listens. Beyond the city's fading edge, the land opens into the shadows of the Sundarbans. Mangrove roots rise from the mud like ancient monuments. Light filters through tangled branches as if searching for a forgotten time. Spotted deer cross silently, their steps softer than the tide. Crocodiles lie still at the water's edge, cold, carved, unmoving. Kingfishers strike the river with flashes of blue fire. In deeper shadows, the Bengal tiger walks with the silence of dusk. Here, life balances on breath, mud, and tide. The Sundarbans is a forest that moves, not with wind, but with water. Very good. Even silence has a pulse beneath these trees. Our path now turns towards Sylhet, where the air carries the breath of devotion. Lanterns glow beneath ancient arches, warming the night like quiet stars. Pilgrims walk barefoot, each step a whispered prayer carried by the earth. Drums rise gently, slow rhythms that blur the border between music and worship. Incense curls upward, drawing unseen circles into the air. Voices join in devotion, soft, rising, trembling with longing. Hands raised, eyes closed, hearts open to the unseen. In Sylhet, prayer becomes a flame, quiet, unwavering, eternal. वापस आगे ढाका ऐसा मंजर है. Our journey follows the Buraganga's bend, revealing Ahsan Manzil, the pink palace watching over the river for centuries. Its rose-colored walls shimmer beneath the sun, a relic of Nawabi splendor. Inside, high ceilings and marble halls echo with steps of rulers long gone. Portraits watch from the walls, faces that shaped trade, power, and Delta history. Outside, families rest on the steps, turning royal ground into a living garden. Boats drift below, passing the palace like pages of a river-written story. At dusk, Ahsan Manzil glows like an ember, soft, steady, remembering everything. Here, the past and river breathe together, gentle, patient, unbroken.
East of Dhaka, the road leads us to Sonargaon, once the shining capital of Golden Bengal. Panam City stands in silence, its abandoned streets echoing with footsteps long vanished. Doorways open into rooms filled with dust, shadow, and forgotten grandeur. Ivy crawls across brick walls, stitching nature back into history. Merchants once traded silk and gold here. Now only wind walks the corridors. Light falls through broken windows like memories returning home. Panam City remains a monument, not to power, but to impermanence. Here, history is not forgotten, only waiting. Ahead of us, the land rises into rolling hills, an ocean of green woven by tea and mist. Workers move across the slopes like quiet strokes of a brush. Baskets fill with fresh leaves, light, fragrant, alive with morning dew. The hills stretch endlessly, soft as folded fabric under the rising sun. Small houses cling to the slopes, carrying the scent of boiling tea. Paths curve through the bushes like green corridors of wind. Hands pick leaves with a rhythm learned from generations. In this quiet world of green, time does not hurry. It drifts. Wow, कितनी खूबसूरत बात है. The tea gardens of Sylhet, where the hills breathe in shades of emerald. वाह, ये मुझे लग रहा है वो दूसरी साइड में जो आजकल हम The देखते journey हैं ना. climbs into the southeast hills, toward Bandarban, where clouds drift देखा, low across अब the पता earth. चल गया हमें. Nilgiri rises first, its ridges wrapped in white breath. Farther west, Nilachal opens wide, Monastery a है. balcony carved from sky. Villages rest along the ridges, their roofs glimmering like scattered lanterns. Very good. Women carry bamboo baskets through swirling fog. Children run across wooden bridges hung over valleys of cloud. Sunlight breaks through the mist, revealing layers of green rolling into the horizon. Bandarban, where mountains breathe like oceans of sky. Deeper into Sylhet, the world shifts into shadow and reflection. Welcome to Ratargal. It's dark. Trees rise from still water like pillars of an ancient drowned temple. Boats slip through narrow channels, leaving only ripples to mark their passing. भाई ऐसी जगह हमें देखी नहीं थी ना.
The forest reflects perfectly. Sky above doubled beneath the boat. लेकिन खुद हम जा रहे हैं ना तो थोड़े से Light moves softly across the water, painting the forest in shifting brightness. Deep silence settles on every branch and leaf. सही बात है Here, even time slows, drifting like a forgotten breath. Ratargal, where the forest becomes a mirror and the mirror becomes a world. अब ये हमने देखा ना कि खुद लगा के रखते हैं स्टॉप्स देने के लिए The journey drifts south into Barishal, where rivers turn into marketplaces and life floats on water. Here, guava boats arrive by the dozens, small wooden hulls overflowing with green gold. यस 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 हाँ Farmers paddle through shaded canals, steering harvests grown in orchards just beyond the river's breadth. तो देखो पूरी मार्केट बनी हुई है ना Bargains rise and fall like tides. Hands reaching, voices calling, fruit exchanged as quickly as the current. इतनी स्वीट्स भी है Women sort the harvest with practiced grace, their movements steady as the river beneath them. Children balance at the bow, laughing at boats brushing past like drifting leaves. Above the water, sunlight scatters through branches, turning the whole market into a living mosaic of green and gold. अपने अपने इलाके की जो भी उनकी पैदावार है स्पेशल ये जो हार्वेस्ट Barishal's floating market, वो यहाँ ला के इसको where a river becomes a road इसके लिए बार्टर and fruit becomes the color of life. बिजनेस हो रहा है ना हाँ और टाइनी बोट भी है और बड़ी बड़ी है हाँ माशाल्लाह ये कितनी खूबसूरत जगह है Further east, the landscape opens into Kaptai Lake, a vast blue world born from a drowned valley. Forested hills rise from the water like islands drifting through time. Boats glide between the hills, carrying villagers along ancient river paths now hidden underwater. Fishermen cast their nets into water dark with depth and memory. Ripples travel far, fading into the blue silence of the lake. Villages sit on the slopes, watching the lake as if watching their own past. लग रही है देखो जरा Sunlight scatters across the surface, turning the lake into shifting glass. Kaptai, where a valley sleeps beneath a sea of sky-colored water. देखो ना हर आइलैंड पे वो बताते थे कि डिफरेंट उनकी स्पेशलिटी है जो होती है हाँ Our journey enters the heart of the delta, where rice fields rise in green tiers, waiting for the sun to turn them into gold. At dawn, farmers step into the fields, their silhouettes woven into the morning mist. Sickles flash in quiet rhythms, a choreography older than any empire. Women gather the stalks into bundles, tying the season together with threads of patience. Children run between the terraces, their laughter echoing across the open fields.
When the sun rises high, the fields glow, thousands of stalks swaying like waves of living gold. Threshing begins under the heat, grain separating from straw with the humble rhythm of survival. Above it all, egrets drift in white arcs, blessing the harvest like wandering guardians of the fields. This is the season of gold, where the land feeds the people, and the people keep the land alive. The road turns south to the open sea, toward Cox's Bazar, the longest beach on Earth. Waves fold endlessly onto the shore like pages written by wind. Fishermen pull nets from the surf, their silhouettes carved by the rising sun. Children run barefoot across wet sand, leaving trails the sea quietly erases. Fishing boats rest like painted birds against the horizon. Beyond the waves, hills rise faintly, the edge of another world. At dusk, the sky pours gold into the ocean, and the ocean carries it without end. Cox's Bazar, where land, sky, and ocean meet in a single breath. Saint Martin. Far offshore, the sea gathers itself into a small circle of land. St. Martin's Island, coral-born and याद wave-shaped. रह गई हमें चीजें ना पता चलता जा रहा है बहुत Water ज़्यादा। glows turquoise, clear enough to see the shadows of corals below. Boats drift across shallow reefs like leaves carried by tide. Fishermen mend their nets beside the shore, weaving salt with patience. Palm trees lean toward the wind, offering shade to anyone who passes. Crabs hurry across the sand, leaving tiny stories etched in their wake. At sunset, the island glows pink, the color of a day folding into rest. St. Martin's, where the sea dreams in coral and light. पता रात में भी साया में नीचे चले जाता है सुबह के Our journey reaches its final horizon, Kuakata, the beach where the sun rises and sets upon the same endless shore. Dawn spills across the sea like silver, stretching into a morning without shadows. Fishermen push their boats into the surf, silhouettes etched against the brightening sky. Waves roll in wide, patient breaths, each one carrying the rhythm of a land shaped by water. Women gather near the shoreline, setting out baskets of salt, shells, and morning catch. By midday, the beach becomes a ribbon of shimmering heat, stretching long into the blue. When evening falls, the sun sinks into the ocean in colors of copper and fire, closing the day where it first began. Kuakata, where two suns frame a single world,
and the journey ends in light. From the tea hills to the open sea, Bangladesh reveals itself as a land shaped by water and will. Here, the rivers never sleep. They rise, fall, and return like breath. People adapt with quiet courage, building life from mud, flood, and faith. In every village, a lantern glows. In every city, a tide of voices rises. Bangladesh reminds us that resilience is not noise, but a steady heartbeat. The delta flows onward, carrying dreams shaped by tide and time. And as the horizon opens, it invites us to follow into the next story the water will tell. This is Bangladesh, where life endures, where light returns, where every journey begins again. हमने आज तक बांग्लादेश के ऊपर काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हैं, लेकिन वी मस्ट से कि आज की ये डॉक्यूमेंट्री दी बेस्ट थी। बिल्कुल। मतलब इतनी खूबसूरती से बांग्लादेश के शेड्स को यहाँ पे दिखाया गया है ना कि क्या कहने। और इस बात को अगर थोड़ा-सा हम समझें ना तो बेसिकली हमने बांग्लादेश की जियोग्राफी को समझा यहाँ पे कि नेचर ने किस तरह से नेचर की प्रोसेसेस ने टाइम टू टाइम इस रीजन को डिज़ाइन किया और किस तरह से लोगों ने वहाँ पे अपने आप को अडैप्ट किया है कि हमने वहाँ पे कैसे रहना है। ऐसे। मतलब बिल्कुल। वीडियो के स्टार्ट में एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की थी कि भई जब यहाँ पे ज़मीन पे लोग आबाद हुए तो लोगों ने दीवारें बनानी शुरू कर दी और बांग्लादेश के लोग वो थे जो ये सोच रहे थे कि हमने इस पानी के साथ कोप कैसे करना है। ऐसे। और वही सारी चीज़ें अगर देखो तो हमें वो दिखाई कि पानी के साथ और हम किस इस तरह चीज को से भी समझते हैं ना कि नेचर के कार्व किए हुए रास्ते पे ही वो हाँ, सारे लोग चले और उन्होंने बिल्कुल, उसी चीज से अडेप्ट किया। बिल्कुल। और आप देखो कि जैसे-जैसे वो डिज़ाइन हुआ, वहाँ पे लोग उसी तरह से बसे और उन्होंने अपने लाइवलीहुड को उसके ऊपर डिपेंड किया। हाँ जी। डिपेंडेबिलिटी उनकी बेसिकली उस पानी पानी के के ऊपर है। ऊपर है, और बिल्कुल। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड किया, बल्कि उन्होंने अपने आप को उसके हिसाब से उसके रखा है। हिसाब से और किया। जिस तरह से मतलब आप ये देखो कि हमें बांग्लादेश के डिफरेंट शेड्स यहाँ पे जो नज़र आए, चारों साइडों के साइट्स एंड साउंड बिल्कुल डिफरेंट हाँ है। जी। मतलब एक तरफ आपको बड़े खूबसूरत टी प्लांटेशन नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ आपको घाट्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पे बड़ी-बड़ी बोट्स और फेरीज़ खड़ी हैं और लोग उसको देखते हैं, वहाँ हाँ पे जी। जाते हैं। और इन कहीं सारी चीजों को देखे कनेक्ट जो है वो सिर्फ पानी कर पानी कर रहा है। वही हाँ। पानी आपको कभी ढाका ले जाता है तो कभी सुंदरबंस ले जाता है हाँ, और मतलब कभी कहीं कॉक्सेस पे बाजार आ हमें जाते हैं। बीचेस नज़र आ रही हैं, तो कहीं पे मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव नज़र आ रहे फॉरेस्ट हैं। नज़र आ और एक और बात बड़ी हम आपस में कर रहे थे बड़ी मज़े की कि भई इतने वहाँ पे बस स्टैंड्स नहीं हैं, जितने आपको वहाँ पे घाट्स नज़र ऐसे आते ही। हैं, क्योंकि वहाँ का बिल्कुल। मेन जो सोर्स है, ट्रांसपोर्टेशन हाँ का जी। सोर्स है, वो ये दरिया है, ये बिल्कुल, पानी है। बिल्कुल। और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने-आने के लिए ये बोट्स ही यूज़ करते हैं यूज़ वहाँ करते पे। हैं, बिल्कुल। फिर हमें बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें नज़र आईं कि वहाँ पे हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट नज़र आते हैं, फिर हमें वहाँ पे कप्ताई लेक नज़र आती अच्छा, है। और इस वीडियो की एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी, उन्होंने पानी के रास्ते को जहाँ समझाया, हाँ। हाँ तो वो जी। रास्ता जहाँ-जहाँ लेके जाता गया उस डेस्टिनेशन को भी उन्होंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे एक्सप्लेन है किया, क्या। हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, ही है। बिल्कुल इसी आप ये तरह से। देखें कि जहाँ पे वो आए पैडी फील्ड्स के ऊपर जो राइस फील्ड्स थे, हाँ। उसको कहा था सीजन ऑफ गोल्ड कि वो गोल्ड, कितना हाँ। खूबसूरत लग रहा था। ऐसे। सारी फील्ड्स गोल्डन थे। सारी है ना। मतलब आप ये देखो कि कहीं पे बारिशों के साथ टी प्लांटेशन को उन्होंने वो निखारा और जी। वो आपको नज़र आ रही हैं, उसकी खूबसूरती नज़र आ रही है किस तरह से। और कहीं दरियाओं की मदद से उन्होंने ये राइस फील्ड्स को तैयार तो किया। फिर कहीं पे द रिवर ऑफ ग्रीन गोल्ड भी तो है जिसको हम गुआवा मार्केट कहते हैं। हाँ, और आप बिल्कुल। देखो कि गुआवा मार्केट, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे गुआवा का काम हो रहा है, लेकिन गौर से देखो तो वहाँ पे हर चीज आ रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ा एक हाँ, नेटवर्क हाँ है वहाँ जी, पे। ऐसे ही है। बिल्कुल इसी तरह से है।
बहुत खूबसूरत वीडियो, मतलब जितनी तारीफ करें वो कम है। इतनी खूबसूरती के साथ बांग्लादेश को किसी ने अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया, हाँ एटलीस्ट जी। हमने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। ऐसे। हमें तो बहुत मजा आया आज की ये वीडियो देख के और बहुत कुछ जान के बहुत अच्छा लगा। बाकी आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी आपको, हमारा रिएक्शन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।